to say about tissue? Tissue, when, what is the definition in the beginning you have written? Group of similar type of cells. It is the group of one or more than one type of cells. This is one thing you have to remember. Complex में लिख देना, complex tissue में पहला point लिख देना, made of more than one type of cells. Made of more than one type of cells. Right? Examples. Can you give the examples? For example. For example. What are the examples? अब यहां लिखूंगा तो कहोगे हाँ ये. One is known as, and other is phloem. Xylem, phloem, they are examples of complex tissue, right? Both of these together make, both of these together, what they make? What is the term used for that? If I say xylem and phloem together make, you are preparing for UPSC, or the word bundle is there. How we come to know the age of a particular tree? By counting the rings. ठीक है, वो rings बनाने में काम आता है. What is that? What is the term for it? बताओ भाई. Xylem and phloem together they make the vascular bundle. लिख देना. Together they make the vascular bundle, right? And now from here you must know that big trees, there is transportation of food, water, minerals, right? For that they need xylem and phloem. Those plants and trees, they are known as vascular trees. ठीक है, vascular trees. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पढ़ोगे तो वहां पर vascular trees आता है. ठीक है. So what are vascular trees? The trees in which we find xylem and phloem, means vascular bundles are present. So both together they make. ठीक है. अब देखो क्या होता है. Now it is clear, right? Complex. So what you have to remember, they are made up of more than, कोई इसको बच्चा जो है L पढ़ लेगा तो one type of cells. ठीक है, more than one type of cells. Second is examples are xylem and phloem. ठीक है. Third is together they make the vascular bundle. ठीक है, ये है xylem, XYLEM, xylem. ठीक है. This. So together they make the vascular bundle. ठीक है. So what is vascular bundle and how the ring formation is there in the plants? ठीक है. अब हम
if you take the trunk of a tree, suppose we cut it and see from top, इस तरह से हम देखते हैं, right? So you will see like, ठीक है, तरह से रिंग होती है. हाउ मेनी रिंग्स आर हियर? One ring is there. It means what is the age of the tree? 1 year. If I make another, फिर अगले साल नई एक रिंग और बन जाती है, मीन बाहर को बनती है, ठीक है, आउटसाइड. तो इस तरह से. So what can you say about this diagram? On the basis of this diagram means the tree was 2 years old, right? So this part, अगर मैं इसको ऐसे ले लेता हूं, now I make the diagram like this. This is middle part. It is known as, क्या बोलते हैं मिडिल पार्ट को? ये तो vascular bundles हो गए, right? These structures, these are called vascular bundles. It means they contain xylem and phloem, right? Xylem is outside or inner side? ठीक है, खुद देख लेना है इसको, I will not tell you. Xylem, right? It is inside or upside. Outside means, ठीक है. So this middle part, it is known as middle part को क्या बोलते हैं? Cambium. And on one side xylem and on the other side it is phloem. Now you have to tell me xylem is outside or inside, और phloem is inside or outside. एक पता है तो दूसरा अपना पता लग जाएगा. सीधा डायग्राम देखना कोई, अभी क्लियर भी हो जाएगा, है? Xylem outside or inside? हाँ वंश, what is the diagram telling you? Vascular bundle डालना, ठीक है. चलो इसको चेक कर लेना, you have to check it, ठीक है. So this middle part, it is known as cambium, right? Cambium. One, the middle part is known as cambium. You have to see whether this is xylem or this is xylem, ठीक है. ये xylem inside and phloem outside, ठीक है. खुद नाउ तो इससे क्लियर हो गया, ठीक है. सो व्हाट इज द पार्ट, यहां पर मैं सीधे बना दे रहा हूं. वन इज xylem and the other part is phloem, ठीक है. So outside part is phloem and inner is xylem, ठीक है. You have to, तो क्लियर हो गया. सो कैम्बियम, और ये कैम्बियम की वजह से क्या हो रहा है? रिंग फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, a ring, right? The number of rings on the trunk will tell you the age of the tree. And these type of trees, they are known as vascular trees, ठीक है. vascular trees बोलते हैं इनको. Right? So now what is the first? What makes the vascular bundle? What makes the vascular bundle? Xylem and phloem, and the middle part is known as, the boundary between the two is known as cambium, right? This. Now first is xylem, right? A few lines on xylem now. What do you know about xylem? They are mostly dead cells. They are mostly dead cells.
right? So what is the function? They transport water and minerals. They transport water and minerals. ठीक है, तो वाटर जो ऊपर को जा रहा है क्या नीचे को आएगा? फ्लो ऑफ वाटर इन वन डायरेक्शन, अभी तो ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसफर, ठीक है. सो दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. ठीक है, और क्या इसके बारे में? एंड वाटर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ऐसे करके भी जा रहा है. साइड वेज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है, लिख दें. लेकिन क्या होता है? इन वन डायरेक्शन, जिधर को जाएगा वापस नहीं आएगा, राइट? इट विल नॉट कम बैक. साइड वेज transport of water. They help in the sideways transport or conduction of water. ठीक है, क्लियर हो गया? Yes. So after that, in the complex tissue, after xylem, it is phloem. तो इसका मतलब फ्लोएम क्या ले जाएगा भाई? वंश. फ्लोएम क्या हेल्प करेगा? क्या बचिए अब? फूड. ठीक है, तो लिख लो इसमें, इट ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम, it transports food from now fill in the blanks is there. You have to fill the two places. कहां से कहां को ले जा रहा है? The food formation takes place in the leaves. चलो ये हो गया. आज तो बच्चों का दिमाग चल रहा है, सही चल रहा है. टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ठीक है, टू डिफरेंट पार्ट्स. राइट, टू डिफरेंट पार्ट्स. राइट, सो क्या हो गया? इट ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स. इट मींस दोनों साइड मूवमेंट होगा या इन वन डायरेक्शन? ठीक है, तो लिख देना, टेक्स्ट लिखो. कैसे एक्सप्लेन करोगे उसको? मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन बोथ द डायरेक्शंस. बोथ द मींस ऐसे आ रहा और ऐसे भी जा रहा है, कहीं भी जाएगा, ऐसे जा रहा है तो ऐसे भी जाएगा. ठीक है, लिख देना, मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन बोथ द डायरेक्शंस. मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन both the directions. Right, yes, movement of material takes place in both the directions as far as phloem is concerned. ठीक है.